The knowledge of Islam is precious like gold, because keys to success this knowledge does hold. Wealth doesn't stay with people always, beauty doesn't stay with people always, but deen is there always. नसब भी देखना है, हुस्न जमाल भी देखना है, प्रायोरिटी जो है ना वो दीनदारी को दें। और आप बोलोगे इस्लाम में बहुत गुंजाइश है, इस्लाम में बहुत गुंजाइश है, भाई इस्लाम में बेहयाई की कोई गुंजाइश नहीं है। The husband should be the protector of the wife, and the wife should be the protector of the husband. The husband should be the beautification of the wife, and the wife should be the beautification of the husband. The husband should cover the faults of the wife, and the wife should cover the faults of the husband. एक दीवार है मर्द और औरतों के दरमियान, इस्लाम में खड़ी की है, हमने वो दीवार गिरा दी। एक बाउंड्री है, एक लाइन ड्रॉ है मर्द और औरतों के दरमियान, हमने वो लाइन खत्म कर दी और सबको मखलूत कर दिया। ये उसी की तबाही है, और उसको क्या कहा जाएगा? Islam has put a wall between man and woman. We have destroyed that wall, and there's a clear distinction and clear line between man and woman. We have destroyed that line and we mix them. The end result is destruction and nothing else. अगर मर्द और औरत में, मियाँ बीवी में, हस्बैंड या वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, घर के बड़ों को चाहिए अपना किरदार अदा करें, दोनों में मोहब्बत, प्यार, इत्तिफाक पैदा करवाएं और तलाक की नौबत ना आने दें। If there are problems between husband and wife, elders in the family should play their role and motivate them to reconcile, so it does not reach to the level of divorce. अब खुदा ना खास्ता नौबत तलाक की आई जाए, अब क्या करना चाहिए? इसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का बाकायदा एक पेपर है, उस पर अमल करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो पेपर आपको बयान कर दिया जाए। Important Madani pearls about divorcing. The beloved and blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, amongst halal acts, the most disliked act in the court of Allah Azza wa Jal is divorce. To divorce one's wife without a valid Shari'i reason is seriously disliked in Islam, is impermissible and a sin. In addition, it causes much social harm. Therefore, one should avoid divorcing as long as possible. If there is discord between husband and wife, attempts should be made to resolve it and to make them get reconciled with each other in accordance with the teachings of Quran described in verse 33 and 34 of Surah An-Nisa Part 5. An example of a method of reconciliation described in Quran is as follows. If the wife has treated her husband unfairly, he should advise her wisely and nicely. If the issue is still not resolved, he should give up sharing a bed with her for a few days whilst keeping her in his home. Not sharing a bed is aimed at making both of them realize the troubles of lonely life in case of divorce. There is a strong likelihood that both of them will learn a lesson from loneliness and resolve their differences. If this does not work, then the husband can use stricter means of reprimand, remaining within the bounds of Sharia. Another effective way for achieving reconciliation is that both sides select wise and perspective individuals to mediate between them. If these individuals play their part wisely and enthusiastically with good intentions, Allah Azza wa Jal will create harmony between husband and wife. To bring the discord to an abrupt end by simply divorcing the wife on the spot is not a solution to the problem. This will lead to nothing but regret and remorse. However, if the relationship has broken down to such an extent that the husband and wife can no longer fulfill the Shari'i rights of each other, and there is no other option but divorce, then the husband should divorce his wife in accordance with Sharia. The Shari'i method is as follows. During those days of the purity of his wife in which the husband has not copulated with her, he should pronounce
or write only one raj'i, reversible divorce in these words: I have divorced you. He should then leave her till the iddat is complete. Upon the completion of iddat, the woman will be free from nikah. Remember, only one raj'i divorce causes separation between husband and wife on the completion of iddat. The common misconception that they are not divorced unless 3 divorces are pronounced or written is absolutely wrong. If the husband intends to divorce his wife, whether orally or in writing or through an affidavit, he should use the option of only one divorce. No matter how hard the affidavit preparing person or the lawyer presses the husband to write 3 divorces, stating that pronouncing or writing 3 divorces is the same as or better than one divorce, the husband should never trust them and force them into writing only one divorce. One raj'i divorce is particularly recommended because pronouncing or writing 3 divorces simultaneously is a sin and contrary to Sharia. Furthermore, it also puts an end to the grace to restore the marriage. If divorce is only pronounced or written once, then there remains the option to restore marriage without nikah during the period of iddat and with nikah after the period of iddat. Even though the option to restore marriage remains open if 2 raj'i divorces are pronounced or written, it is a sin to pronounce or write 2 raj'i divorces simultaneously. Unaware of Islamic teachings and Shari'i rulings, most people these days pronounce or write 3 divorces simultaneously in anger and emotion on insignificant matters. When they come to their senses, they feel extreme remorse and regret. Remnants about their past life, grieve over the darkening future of their children, and sometimes, tricked by shaitan, look for different pretexts to live together again. Remember, pronouncing or writing 3 divorces simultaneously is a sin, but 3 divorces will take place whether pronounced all at once or on different occasions, and whether with one word or with 3. If, therefore, divorce is inevitable with no possibility of reconciliation, then it should be pronounced in accordance with the Shari'i method already described above and is being separately described again below for an easy understanding. The most desirable way of pronouncing divorce is as follows. During those days of the purity of his wife, in which the husband has not copulated with her, he should say the following words to her once only: I have divorced you. He should then leave her and stay completely away from her until the completion of iddat. The woman will be free from nikah on the completion of iddat. The benefit of this method is that if the husband and wife desire to reconcile during the period of iddat, they can restore their marriage without nikah. If iddat has passed, then they can restore their marriage with nikah but without halala. For a solution to any divorce related issues, please contact Darul Ifta rather than attempt to resolve it with your own guesses. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salatan wa salaman alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Madani request: divorce is usually pronounced in anger. Learn to control your anger by studying the booklet Cure for Anger, published by Maktabatul Madina. Dearest viewers of Madani channel, in order to make the relationship healthy and loveful between husband and wife, it is important that we should watch some Madani Pulse from a silsila which was done on Madani channel
Islam और शादी, Islam and marriage. Let's see few Madani pearls of that beautiful सिलसिला। बाज़ औक़ात इस तरह के कलिमात या जुमले कह दिए जाते हैं जो वाकई दिल में बड़ा गहरा ज़ख्म कर देते हैं। तो वो एक चीज़ होती है जो इंसान के वाकई बस में नहीं होती, दरगुजर भी कर चुका होता है, वो दिली तौबा माफ़ भी कर चुका होता है, लेकिन बात दिल से निकालना शायद उसके बस में नहीं होता। ऐसे होते हैं। तो बाद औक़ात शौहर जो है ना, ये ऐसे घटिया और इंतहाई जैसे कि वो गैर अखलाकी जुमले बक देता है कि उसके दिल से वो बातें जाती ही नहीं है। यानी यूँ समझे बाज़ औक़ात शौहर नज़रों से गिर जाता है बीवी के, ऐसी घटिया बात करता है, और बाज़ औक़ात बीवी ऐसी घटिया बात कर देती है कि वो उसकी नज़रों से जैसे गिर सी जाती है। तो यार ये बहुत एहतियात करनी पड़ती, ज़बान से बड़ी बर्बादियाँ होती हैं। तो बाज़ औक़ात नेचर में होता है कि बाज़ों का गुस्सा थोड़ा देर से जाता है, मूड बहाल होते होते होता है। फिर देखें ना यार, अगर वाकई अगर शौहर ने ज़्यादती की है तो अब ये सिर्फ इसी का इंतज़ार ना करे कि ये ज़ख्म भरते भरते भरेगा, को दो चार दवाएं ववाएँ खुद भी करे, खुश करने की कोशिश करे, राज़ी करने की कोशिश भी तो करे ना। जो भी जायज़ तरीक़ा हो अल्लाह की रज़ा को सामने रखे, और जायज़ तरीके से कोई इसको खुश करने का अगर इंतज़ाम कर सकता है तो वो भी करे कि यार दोनों का एक दूसरे से वास्ता पड़ता है, साथ दरगुजर करना चाहिए। अगर इस तरह बीवी बच्चों की अम्मी अपना मुंह चढ़ा कर रखेगी, अपने गुस्से को कायम रखेगी ना, तो फिर इसका अपना भी ज़ब्त और सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है, क्योंकि अब उसको घर में दिल ही नहीं लगेगा। वो बार बार आएगा, देखेगा कि यार इसका मतलब कि तरबूज की तरह मुँह भुला हुआ है। तो अब ये दुरुस्त नहीं है, इससे आप अपना घर तबाह करोगे। आप ये ना सोचो कि ये और मज़ीद नरम होगा, बहुत मज़ीद झुकेगा। अगर औरत के नेचर में मर्द को झुकाना है तो ये औरत ही अच्छी नहीं है, ये हाकिम है। इसको अल्लाह ताला ने बड़ा किया है तो इसको बड़ा रहना ही चाहिए। अब बड़े से गलती हो जाती है, तो जब बड़े से गलती हो ना तो छोटों को चाहिए कि बड़ों से दरगुजर करें और इनकी गलतियों को मतलब कि सरफ़े नज़र करें। और अगर इस तरह ये मुंह चढ़ा कर रखेंगी ना तो फिर वो उसको उसका भी ध्यान बन जाएगा, अभी छोड़ो। तो ये याद रखिए कि अल्लाह ना करे अगर इसे छोड़ दिया, मेरी अपनी इस्लामी बहनों को मैं समझा रहा हूँ, जो मेरे घर पर बेटी मेरी इस्लामी बहन है, मैं इनको समझा रहा हूँ कि अगर छोड़ दिया तो फिर पहले तुम ऐसा मुंह लेकर साल भर तक बैठी रहना, तो ऐसा ना करें। वो दूसरा घर बसा लेगा, फिर क्या करोगे? आप बोलोगे मैं दूसरा घर बसा लूँगा, बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं करें। तो दोनों से जब भी गलती हो तो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगे, और अच्छी तरीके से माफ़ी मांगे और फ़ौरन दरगुजर करें। उसकी बड़ी फजीलत है कि जिसको गुस्सा देर से आता है और जल्दी चला जाता है, और उसकी मज़म्मत है शरीयत में कि जिसको गुस्सा जल्दी आता है और देर से जाता है। तो ऐसा ना करें, घर टूटने से बचाइए। ये घर टूटता है ना, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अगर बीवी को प्यास लगी है, आज तक ये आपको 12 गिलास पिला चुकी है, अगर आप उठाकर 1 गिलास उसको पिला दोगे अच्छी नीयतों के साथ, इंशाल्लाह कतरे कतरे पर नहीं क्या मिलेंगे, उसका दिल अलग खुश होगा, उसकी दिल जो ही अलग होगी। औलाद की तरबियत भी तो इसमें हो रही है। मुफ्ती साहब, I have a question. जी। Earlier Nigran Shura said if there is a problem raised at home, you should control, you should control, you should control. We all are human beings. Tell us how we should control. Some moments we are out of control also. भाई, आपके घर का मैटर कोई बाहर वाला कंट्रोल करेगा? Who is going to control? आपको ही कंट्रोल करना है। अच्छा, इस कंट्रोल करने में जो मेन किरदार है ना, वो मर्द का है। वो मर्द इसलिए नहीं कि डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा और रिजाल क़व्वामून अला निसा। Some people might think Kawwamun the more powerful one. वो उसको इतना ही पोलाइट रहना है, इतना ही टॉलरेंट लेना है, और इतना ही उसको बर्दाश्त। मर्द को ज़्यादा बर्दाश्त चाहिए, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के बारे में फरमा दिया कि ये टेढ़ी पसली है, तो इसको सीधी करने बैठोगे तो टूट जाएगी, और इसका टूटना तलाक है। तो आपको उसके
रॉन्ग एटीट्यूड के साथ कंप्रोमाइज़ करना है और उसके साथ निभाना है। अच्छा, फिर इसको एजुकेट करना है। मर्द जो अफसर है, आप इह्याउल उलूम की जो दूसरी जिल्द है उसमें सारा डिटेल मौजूद है। मर्द चूँकि अफसर है, मर्द चूँकि नाज़िम है, उसको औरत को एजुकेट करना है। उसकी इबादत के मामले में, उसकी बहुत सारी चीज़ों के मामले, उसको तालीम और ताल्लुम, ये ज़िम्मेदारी मर्द की है कि औरत को सिखाए, इसकी तरबियत करे, इसकी इस्लामी तरबियत करे। ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। ये मर्द फिर फाइनली क्या कंप्लेन करता है कि तुमको तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया। एक तो तुमसे बात आ जाए, आपसे बात करे, तमीज़ से बात करे। वो औरत शी नीड रिस्पेक्ट। अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगे वो आपकी और रिस्पेक्ट करेगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन जैसी चीज़ है तो कर दें। Yes, it is very important that men should talk to their wives with respect and with polite and respectful words. She is your wife and she deserves that kind of recognition and respect. And in return, she would respect you and she would obey you and she would appreciate you as being her husband, as being her man in her life. So it is very important. It begins from here, the respect. We must not use words that are insulting or belittling or degrading her status or make her feel that she is, a secondary citizen or she has a secondary position as human being. She's a partner. She is like a, like there are two wheels in the motorbike and she's one wheel and you are one wheel. And driver is? Husband. And he's a wheel and a driver. नहीं, एक बात कर, चलाना भी उसी को है ना। He's the one should be in control. He's the back wheel, Mufti Sahib, the one that causes it to move. He plays two roles. Ji. One is that he is the wheel, and the other role is that he is the driver of that motorbike. अगर डिसबैलेंस पीछे का पैसेंजर डिसबैलेंस करता भी है तो हैंडल उसी ने संभालना है। It's the same as a plane. You got a pilot and a co-pilot. The pilot controls and the co-pilot is his deputy. If both want to fly, that plane will crash. एक औरत ने खाना बनाया, जब शौहर ने खाना खाया तो उसमें नमक ज़्यादा था, उसको गुस्सा आया। Yes, they were husband and wife, and wife prepared food and she put extra salt in the food, and husband got angry. अब वो गुस्सा निकालना चाहता था कि उसको ख्याल आया कि मैं भी तो गलतियां करता हूँ। He wanted to express his anger, and then he realized, I also make mistakes. मैं इसकी गिरफ्त करूँगा, अल्लाह ने मेरी गिरफ्त फरमा ली तो। If I capture her for her wrongdoings or for her mistakes, then if Allah subhanahu wa ta'ala captures me for my mistakes, what will happen? इससे नज़रअंदाज कर दिया। So he overlooked that. इंतकाल के बाद इसको ख्वाब में देख के किसी ने पूछा तेरे साथ क्या मामला हुआ? After his death, someone saw him in the dream and asked him how Allah subhanahu wa ta'ala treated you. मुझे कहा गया कि तुमने अपनी बीवी की खताएं माफ़ की, हमने तेरी खता माफ़ कर दी। He said, I was told that you have overlooked the mistakes of your wife. We have overlooked your mistakes. तो दरगुजर से घर चलेगा। So you will make your house successful and run your house properly by forgiving. Ajab, like we discussed the other day also, that a husband has rights and a wife has rights. And you often get the wife wanting the husband to fulfill her rights, and the husband wanting the wife to fulfill his rights. But they forget that the responsibility of fulfilling the other's rights is on their shoulders. The husband has the responsibility to fulfill the wife's rights, and the wife has the responsibility to fulfill the husband's rights. But whenever the arguments come up and we're reconciling marriages and things like that,
but you know, you should be doing this and you should be doing that, and he's supposed to do this and she's supposed to do that, but nobody looks at themselves. You say that nobody looks at them, themselves. When you ask them, are you fulfilling the right? Yeah. They say, yes, I'm fulfilling every right. Yeah. It's just that the other one doesn't fulfill the right. Yes. So why the complaints are coming? Both have same complaint. Yeah. They He's both not have the same fulfilling, complaints. He's not fulfilling. Yeah. So we should And- check if we fulfilling, and then And absolutely. On their because own, people won't do that because they feel we angels and we do the perfect things. Yeah. And Mufti Sahib, the thing is that, you know, you're accountable for your own actions. And, you know, if we just, you know, it boils down again to fear of Allah subhanahu wa ta'ala. That if we can instill that in our lives, then we will fulfill everybody else's rights, whether our rights are being fulfilled or not. And, you know, the example that Nigrani Shura gave about, you know, the excess salt in the food, it's an example for everyone to learn from. Because, you know, that person introspected and said, you know, I am full of fault. How can I point out the fault of the other person? And if all of us could just, you know, utilize that example, whether in our marriages or other relationships as well, that I got so much of fault within myself, and I will be accountable for my actions. Who gives me the right to go and point out everybody else's faults? And what happens is that when you start, you know, trying to pick out the fault of somebody else, then, you know, things that we discussed yesterday, tajassus, you know, will start. Then you'll start, you know, nitpicking, you know, and you'll start looking for more faults. And you'll want to now expose, because now, you know, she's got, you know, 5 arguments against me, so I need to have 10 arguments against her. So then the nitpicking starts, and then the backbiting starts, and then it just goes from bad to worse. But if at the beginning, you know, you sit back, analyze the situation and say, you know, I am more at fault than anyone else, and I need to first rectify myself before trying to rectify the other. And you'll find that, you know, there's a thing in psychology, it's called cognitive dissonance. Cognitive dissonance is that when somebody treats you badly, your reaction should be one that makes the other person introspect. इत्फ़अ बिल्लती ही अहसन, और सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल. Oh, listener, retaliate with goodness when an evil is done to you. एंड रिजल्ट इज कि जब भी कि तुझ में और उसमें दुश्मनी थी, ऐसे हो जाएगा जैसे गहरा दोस्त. So there was enmity between him and you, and this will turn into strong friendship. Subhanallah. And that is, you know, cognitive dissonance is a psychological term, but alhamdulillah, They have taken from Quran Pak. You know, I mean, and put their label. if somebody treats you badly, your reaction should be one that makes the person introspect. For example, I've been treated badly, and I must react towards you for you to think that, you know, am I that person? You know, am I so bad that I actually reacted that way to this person? इत्फ़अ बिल्लती ही अहसन, इसके मनाजिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से लेकर सहाबाए कराम, और सहाबाए कराम की सीरत पाक से लेकर आज तक औलिया कराम की ज़िंदगी में हमने ये चीज़ें देखी हैं. और अगर आप घर चलाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू रन योर हाउस विथ हैप्पीनेस, आपको ये अदा इख्तियार करनी पड़ेगी, शौहर को भी और बीवी को भी. यानी दुश्मनी को मोहब्बत में बदलने का नुस्खा ही है. क्या कहेंगे मुफ्ती साहब इसको? This is the recipe of changing enmity into love and friendship. अच्छा, अब कुरान पाक में ये बताया कि ये जो है ना, इत्फ़अ बिल्लती ही अहसन, ये नेमत है. ये जो खुसूसियत है, ये किसको मिलती है? इसका बयान है कुरान पाक में. इमाम साहब, अल्लाह फरमाता है, वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, और ये दौलत नहीं मिलती मगर साबिरों को. वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और
इसे नहीं पाता मगर बड़े नसीब वाला। So this is actually a ni'mat of Allah, that no one gets this ni'mat except the patient ones, The patience, yes. and no one gets this ni'mat except the one who is a lucky person. शख्स अपनी बच्चों की अम्मी वाइफ की शिकायत करने एक बुजुर्ग के पास गया। A person went to a pious person to complain about his wife. जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो सुना कि अंदर से औरत की आवाज आ रही है और वो औरत बुजुर्ग के साथ बदतमीजी कर रही है। When he reached to the house of that pious person, he heard वो औरत की आवाज आ रही है और औरत की आवाज से इसको लगा कि हज़रत खुद ही इसमें मुब्तला है, मैं क्या शिकायत करूं। He reached the house and he heard the voice of a woman scolding, and he felt that Hazrat is victim of the same situation, same problem, so there's no need to go and tell him about my problem. अब हजरत को पता चला कि फलां शख्स आया था तो हजरत ने उससे मुलाकात की। When this pious man came to know that so and so came, so Hazrat went and met this person. उससे कहा हुजूर मैं आया तो था मगर जो प्रॉब्लम मैं लेकर आया तो वो प्रॉब्लम सेम आपके साथ था तो मैं क्या शिकायत करता। He said, Hazrat, I came to discuss something, but I realized that you are also suffering with the same problem, so I decided not to discuss with you. हजरत ने फरमाया कि मैंने अपने लिए कुछ जहन बनाया, तुम बना लोगे तो तुम्हें भी सब्र आ जाएगा। Hazrat said that I've made my mind for something, and if you also make your mind in the same way, you will have patience. इसकी वजह से यानी मैं जोजा की वजह से मैं गुनाह से बचता हूँ। He says, because of my wife, I'm saved from sinning. ये मेरे पीछे मेरे बच्चों का ख्याल रखती है। She looks after my children when I'm not around. मेरे खाने पकाने धोने करने कपड़े धोने का इंतज़ाम करती है। She looks after my food, preparation of my clothes, washing, etc. मेरे पीछे अपनी इज्जत की हिफाजत करती है। She looks after her chastity when I'm not around. अगर मैं उसकी कुछ सुन लेता हूँ तो क्या हर्ज है? So if I hear some hard words from her, so what's the big deal? तो फार्मूला। But sometime mind blasts. You see, it's that. सम टाइम में रहेगा मंसूर भाई। Come this time. Close some time. No, Come into full time. You see, it's that typical story of, you can feed a person with your hand. Even for 40 years, you can feed them with your hand. But the one day you take the plate of food and throw it on their faces, they'll forget the 40 years of feeding with their hands and they'll remember that one day. मेरा अपना, it's my opinion, और ये मैं तमाम जो वाइफ एंड हस्बैंड से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अब कहते हैं मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता यार, इतनी बातें खुलती हैं और एक दूसरे से कहना सुनना हो जाता है। क्या कहेंगे मोती साहब? Yeah, sometimes they expose each other so much and they're fighting and they reach a conclusion that now all that what has happened, there is no way that we can live together. Man says, no, I can't live with her, or she says, no, I can't live with him anymore. See what kind of things he has done. He has exposed me, disrespected me, humiliated me. तो मैं आपको समझाऊं, आप दोनों दोस्त नहीं हो, आप दोनों को बिजनेस पार्टनर नहीं हो, आप दोनों को पड़ोसी नहीं हो, जो बनेगी नहीं, आप दोनों मियाँ बीवी हो। जब आप दोबारा मिलकर बैठोगे ना, आप देख लेना विदिन अ फ्यू डेज आप सब भूल जाओगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी है। अल्लाह ताला ऐसा दिलों में और ज़हनों में तब्दीली ले आता है कि आपको बस लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ था और एक दूसरे से माफिया मांगते फिरोगे। And Rajesh Sahib said that he has seen this over and over. Fighting one side, when you reconcile with them and when they spend a day or two, they forget everything that has happened in the past. You are not just friends, you're not neighbors, you're not just colleagues, you are husband and wife. You have a relationship, and that love that is died off
reactivates, and after few days you would not even remember those things, and you back into normal relationship. So don't let your anger drive you and destroy that bond. कभी सोचे ना शोर साहब, ओ हस्बैंड, इस थकी हुई औरत को कभी आपने पानी पिलाया है? Have you ever gave glass of water to this tired woman that works the whole day in your house, oh husband? कभी आपने कहा है कि आप आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर बच्चों को संभाल लेता हूँ? Have you ever said to her that, oh my lady, you must rest and I will look after the kids? जब आप उसके साथ हमदर्दी का सलूक करेंगे ना, तो वो भी आपके साथ बहुत हमदर्दी का सलूक, वो तो कर ही रही होगी, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ा प्लस होगा ना, तो उसकी तरफ से प्लस पर प्लस होगा. When you will show sympathy towards her, share her pain, she will be more sympathetic and she will share your pains more. She's already has a lot of sympathy for you. She's already sharing a lot of your pains. But if you show some sympathy towards her, you will see her reaction. अब इन केस के वो बदतमीजी कर रही है, आपके साथ लाउडली बात कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मैं आपको इसका हल दूं, आप उस वक्त वहां से चले जाओ. In case if she is angry and she's shouting at you and yelling at you and doing all the funny things, I give you a recipe. Leave from there immediately. आप बोलोगे मैं नहीं जाता, ये क्यों नहीं चुप होते, वो औरत है, आप मर्द रहो, आगे पीछे हो जाओ. You are a man, she's a woman, she's screaming. You might say, no, why must I leave? She must keep quiet. She's a woman, act as a man and behave like a man. Leave from that place. हम कहते रहे, ये तो बच्चा है, आप थोड़ी बच्चे हो, वो औरत है, आप थोड़ी औरत हो. People say, this one is a child, you're not a child. So similarly we say, she's a woman, you're not a woman. So अल्लाह ने आपके लिए फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा. Allah subhanahu wa ta'ala has said for you, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा. आप तबीब बने, अगर मरीज घर में है तो डॉक्टर चिखता चिल्लाता नहीं, उसका ट्रीटमेंट करता है. Become a doctor. When there is a patient, doctor doesn't scream and yell. He actually treats the patient. अब रहेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, खुदा ना खास्ता फिर जो नहीं होने का वो हो जाएगा. Now, if you keep on screaming and yelling and shouting, then that will happen which should not have happened. इस्लामी बहनों को मशवरा दो, जब भी शोहर को गुस्सा आए या वो चीखे चिल्लाए ना, चुप होकर एक तरफ बैठ जाए, सामने ना बोले, वरना तकलीफ हो जाएगी. Islamic sisters, take this advice. When you see your husband angry, keep quiet, go sit in one corner. Don't even sit in front of him, don't say anything. सबर का एक मदनी फूल लीजिए. Take a madani flower of patience. हदीस पाक, It's mentioned in Hadith Mubarakah. जिसने अपनी बीवी के बुरे अखलाक पर सबर किया, One who became patient on the bad behavior of his wife, अल्लाह ताला उसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुसीबत पर सबर करने की मिसल अजर अता फरमाएगा. Allah subhanahu wa ta'ala will give him reward similar to the patience of Hazrat Ayyub alayhi salam which he made for his sickness. और अगर औरत अपने शोहर के बुरे अखलाक पर सबर करे, And if woman is patient on the bad behavior of her husband, तो अल्लाह ताला उसे फिरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सवाब की मिसल अजर अता फरमाएगा. Allah subhanahu wa ta'ala will grant her reward similar to the reward of Asiya radiyallahu ta'ala anha, the wife of Fir'aun. Please, it's my request, oh husband, oh wife, oh family members, it's my madani iltija. Please don't fight each other. Please. और माफ़ी मांग ले दूसरे से. एक दूसरे की हक तलफियाँ जो हुई हैं ना, माफ़ करवा लें. क़यामत के रोज़ न बीवी जालिम बनकर आए, न शोहर जालिम बनकर आए. दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें. इतना सा घर है, 4 आदमी हैं, उसमें भी लड़ते हैं. कहते हैं कि दुनिया में अमन हो जाए. घर में तो अमन है ही नहीं, दुनिया में अमन की बातें क्यों करते हो यार? It's very strange, There are 4 people living in the house and they're fighting with each other and there's no peace in that house.
but they desire peace in the whole world. How the peace will happen in the world if you can't have peace, within 2-3 people that are you living together as relatives, bonded to each other, married to each other. Dear viewers of Madani Channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, in this discussion we have discussed a lot of problems, and we have also given some solutions to these problems. The home is a sanctuary of peace. Do not allow it to become a war zone. Be compassionate. Be full of love. Have mercy upon your spouses, upon your family members, and follow the rules and regulations set out by Islam. The husband should fulfill the rights of the wife, and the wife should fulfill the rights of the husband. If we focus on fulfilling our part, then everything will be smooth, and everything, the home will become a sanctuary of peace. Like Nigrani Shura has said, that we all want world peace. World peace starts in the home. That if there are 2 or 4 people in the home and there cannot be peace there, then how can we expect world peace? Soften yourself up. Ask for forgiveness from your spouses. These are the people that you are spending your entire life with. This is the place where you need peace, you need tranquility. There's a lot of stress, there's a lot of tension in the world today. Outside factors affect us, but when you come into your home, you want to relieve that stress. Good. You want it to be a place of peace, a place of tranquility, and you are the one that is responsible for what happens in your home. Soften yourself. Do not react negatively. Create a positive environment. Switch on Madani Channel in your home so that you can learn these things. Get in touch with the environment of Dawat-e-Islami. Follow the sunnah of the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Have you any closing comments regarding this topic? Alhamdulillah, Shahid has given the comments to the viewers of the Madani Channel. Alhamdulillah. Irshad bhai. My dearest viewers of Madani Channel, stay connected to this Madani Channel at all times. Educate yourselves on the principles set out in Islam. Inshallah, you'll find peace in your homes. May Allah Tabarak Ta'ala grant each and every one of us peace in our homes as well. Ameen. And how can they live with love? Have trust, compromise, understand, tolerant, all these MashaAllah. Mufti Sahab, ingredients for peace. have you any comments Yes. for our dear Madani Channel's viewers? घर बचाने की कोई तहरीक चलाएं यार, घर बचाओ तहरीक. Dearest viewers of Madani Channel, as you know that this silsila is causes of divorce. Even though we have put much emphasis on how to strengthen the relationship, and the reason behind is that if your relationship is strong, if there is patience in the relationship, if there is tolerance in the relationship, and if you overlook defects and shortcomings of each other, then disputes will not lead you or drive you towards the divorce. And the idea is to discuss matters that are pushing people to the dead end of the relationship, and that is indeed a divorce. Stop divorcing for silly things, small things. You are destroying the life of your spouse, you are destroying your own life, you are destroying the life of your children. In fact, you are destroying the life of whole family, because there are a lot of people involved in the marriage. Your own parents, your brothers and sisters, from your spouse's side, her parents and her children and her brothers and her sisters, everybody gets hurt in this process. So especially Mufti Sahab, जब ये फैमिलीज़ को एतमाद में लेकर शादी नहीं करते ना, और जिसको कोर्ट मैरिज कहते हैं,
और इस तरह के लव मैरिज के नाम देते हैं, वो जिसमें फैमिली मेंबर्स की रजामंदी नहीं होती, माँ बाप की रजामंदी नहीं होती, फैमिलीज़ का आपस में इंट्रैक्शन नहीं होता, इंट्रोडक्शन नहीं होता, और ये खुद ही अपने तौर पर कर लेते हैं। और जब कुछ अरसे के बाद जब इनके दरमियान नाइत्तेफाकी होती है ना, तो कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स नहीं होते जो इनको आकर बचा सकें, कोई सरपरस्त नहीं होते, जिसकी वजह से भी घर जल्दी टूट जाता है। अगर ये माँ बाप को, फैमिलीज़ को, सबको एतमाद में लेकर काम हो, इनकी दुआएं लेकर काम हो, माँ बाप की रज़ा के मुताबिक शादी होगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखिए कि ये भी बहुत ज़बरदस्त एक सबब बनेगा कि इनका घर टूटने से बचेगा। Yes, and also, you know, a lot of time youngsters, they get married in the court quietly, or they call it a love marriage, and the parents or the family do not agree, but they don't care, they go and get married. And then at these difficult times, when there are disputes and when there are fights, they don't get the support of their families, their parents, and the elders in the family are not involved because of how the marriage was conducted and initiated, and this also leads them to be supportless from the family. So get married with understanding of the family, with the blessings of your parents, with their involvement. Let them choose the right partners for you, whether you are boy or girl, because they will see a lot of good things that you are not going to see. You might just fall in so-called love because of the looks and the beauty and the color of the skin and whatever, or how the eyes are and how the nose is. But you know, you might not see many other things which are the foundations of good relationship and lasting relationship. तो शादी के बाद फिर वो अपनी बीवी में गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा होता है, Yeah. और वो अपने शोहर में बॉयफ्रेंड ढूंढ रही होती है। Yeah, after marriage, you know. अब वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो हस्बैंड है, वो गर्लफ्रेंड नहीं है, वो वाइफ हो गई है। तो जब नाम चेंज हो गया, रिश्ता तब्दील हो गया, तो नेचर भी तब्दील हो जाना है। आपको होश आता है कि ये कौन हो गई और तो ये कौन आ गया, हाँ, तो चेंज हो गया है। इसलिए लव आफ्टर मैरिज इज मोर सक्सेस देन लव बिफोर मैरिज। और उसमें गुनाह बहुत हैं, अल्लाह की नाफरमानियां बहुत हैं। एक दूसरे को तोहफा देते देते जो स्टेप करते हैं, ये रिश्वत है। गुनाह और हराम का इतना उसमें होता है, अल्लाह की पनाह, उससे बचिए। और जो शरीयत के मुताबिक शादी करने का एक तरीका है, सोसाइटी को, जिसको एक घर वालों को, माँ बाप को रज़ामंदी के साथ जो तरीका है, उसको अपनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला घर अमन का गहवारा बना रहेगा। लव आफ्टर मैरिज is a successful recipe for lasting the relationship and marriage, and love before marriage is dangerous. It leads to a lot of sins, a lot of haram activities, and then, you know, when people are married in this way, so the boy is looking girlfriend and the girl is looking boyfriend, and same, you know, passion, same charm, you know, same kind of care. That's not going to happen. You're not girlfriend anymore. You are now wife, and he's not boyfriend anymore. He's a husband. Before you would meet after 2 months, every now and then. Now the reaction is different. Now you're staying together. You're spending every day, every night together. So now the situation completely changed before marriage. Before marriage, man, boy, like a slave. Okay, and after marriage, he like the master. He become a master. And after marriage, he's the boss. You know, he's the master, and she must be slave. She's shocked. ये क्या हो गया? She's shocked. Everything has changed so suddenly. You know. There are so many more causes of divorces. But simple is that अगर खुदा का खौफ होगा, सब बेहतर हो जाएगा। इंशाअल्लाह। There are a lot of causes of divorce. As Nigran Ashura said, you know, if you have fear of Allah,
everything will come right. Because if you have fear of Allah, you will not be unjust. You will, not give pain to someone unjustly and try to make their lives miserable and difficult. Because you fear Allah, you would try to do justice and fairness. अपनी जिंदगी से ना अल्लाह की नाफरमानी को बाहर निकालें. Remove the disobedience of Allah from your life. दिलों में मोहब्बत अल्लाह पैदा फरमाता है. Allah subhanahu wa ta'ala puts love in the hearts. इत्तिफाक अल्लाह पैदा फरमाता है. Allah subhanahu wa ta'ala creates unity. मोहब्बत जैसी नेमत अल्लाह अता फरमाता है. Allah subhanahu wa ta'ala gives gift like love. इन नेमतों को पाने के लिए अल्लाह की फरमाबरदारी करनी पड़ेगी. In order to get these gifts, we have to obey Allah. अल्लाह की नाफरमानी से इत्तिफाक खत्म होकर ना इत्तिफाकी में तब्दील हो जाता है. Because of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, unity is destroyed and changes into disunity. दो मुफ्ती साहब प्लीज ट्रांसलेट. एक लड़का था जो नेक माहौल का था और लड़की भी नेक माहौल की थी. There was a boy who grew up in a pious environment and same as the girl. दोनों की शादी हो गई. They got married. दोनों एक अच्छे अंदाज से घर चला रहे थे. They were running their home nicely. नॉर्मल सी आमदनी थी. थोड़े अरसे बाद अल्लाह ने बच्चा भी दे दिया. खुश थे. They had average income. After a while, Allah Ta'ala blessed them with a child. They were happy. अचानक औरत के जहन में क्या आया कि कोई इदारे से अपॉर्चुनिटी आई और एक इन्वेस्टमेंट का आया और कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आमदनी बढ़ जाएगी, घर का माहौल थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हालात तब्दील हो जाएंगे, तो क्या ही अच्छा है कि हम उसमें कुछ कर लें और ये कर लें वो कर लें. उसमें था इंटरेस्ट, सूद था. Suddenly, the woman saw an advertisement that certain finance institution is offering an opportunity of investment. So she said and discussed, let's put some investment, some money in that, that would help us in future. But that investment was based on riba, on interest. अब लालचन अंधा कर देती है. इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी और वो आमदनी शुरू में तो अच्छी आई, थोड़ा घर का माहौल अच्छा होने लगा, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म होने लगा और इन पर कर्जा चढ़ने लगा. Greed makes person blind. In the beginning there was some income coming and they felt nice, but then things changed and they were indebted and income stopped as well. अब कर्जा चढ़ने लगा तो आमदनी, कर्जा और घर में नाइत्तिफाकी शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि आमदनी खत्म होने लगी और कर्जा चढ़ने लगा, लोग मांगने लगे, तो आपस में वो नाइत्तिफाकी और लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई. Because of all these conditions and situations, there was now anger in the family and disputes started and they were fighting with each other, husband and wife. इतने लड़ने लगे कि औरत ने बेजार होकर बोला, अगर मैं अच्छी नहीं लगती तो मुझे तलाक दे दो. So they fought to the extent that the woman just in anger said, if you don't like me anymore, divorce me. उसने डिवोर्स कर दिया. And he divorced her. बच्चा रोने लगा. Child started crying. औरत रोने लगी. Woman started crying. और कहा कि नेकी ने हमें मिलाया था, गुनाह ने हमें जुदा कर दिया. She said the good deed brought us together, but sin separated us. घर में सूद का पैसा आ गया, हराम का पैसा आ गया. Because interest money entered the house. जब पेट में हराम जा रहा है, बच्चे हराम की ग़िज़ाएं खा रहे हैं, नाजायज़ आमदनियाँ हमें मतलब हमारे गिर्द हैं, तो अब मोहब्बत फिर किस रास्ते से आएगी? Since we have so much of haram earnings and haram risk coming and we consuming, from which way the love will enter in the relationship? मोहब्बत और इत्तेफाक को अल्लाह की फरमाबरदारी वाला रास्ता चाहिए होता है. ना फरमानी की दीवार खड़ी कर कर मोहब्बत फलांग कर नहीं आएगी. The true love needs a way of obedience of Allah Azza wa Jal to enter your home. If you have put up a wall of sins,
then you have not left any hole or door for the love to enter your house. घर में दर्स फैज़ान सुन्नत का दर्स शुरू करें, मदनी चैनल देखें, गुनाहों भरे कामों से, प्रोग्रामों से ख़ुद को बचाएं और मदनी इनामात घर में नाफिज करें और दावत इस्लामी के माहौल को घर में आने दें। इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ रहेंगे। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत, प्यार, इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। The knowledge of Islam is precious like gold. It is keys to success. This knowledge does hold.